Bismillahirrahmanirrahim. Now let's move towards paragraph number 3. The major causes of noise pollution in Pakistan are traffic on roads, construction sites, careless use of electronic appliances, and loud speech patterns. Noise coming from different modes of transport, as vehicles, airplanes, trains, ships, proves to be highly stressful for human communities. With the population growth and development in urban areas, the vehicular traffic has also multiplied. This has given rise to noise pollution, largely in the form of unwarranted honking by drivers. Also, the mushroom growth of residential colonies near airports and railway stations has exposed residents to permanent and unavoidable source of noise pollution. पैराग्राफ की रीडिंग के बाद अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग को पढ़ते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज केयरलेस, लापरवाह, अनकंसर्न्ड और यू कैन से अनवरीड. appliance, alat, tools or you can say instruments. Pattern, बनावट, model or you can say original. Speech, तकरीर, talking. Proves, साबित करना, verify or you can say confirm. Development, तरक्की, occurrence. Communities, तबकात, ग्रुप्स. स्ट्रेसफुल, दबाव डालने वाला, एम्फेसाइज और यू कैन से फोर्सफुल. मल्टीप्लाइड, कई गुना ज्यादा हो जाना, इंक्रीज्ड और एडिड. रेजिडेंशियल, रिहायशी, लिविंग और स्टेइंग. एक्सपोज्ड, खुला होना, बेयर, रिवील और अनकवर. परमानेंट, मुस्तकिल, एवरलास्टिंग, एटर्नल. अनअवॉइडेबल, जिससे बचा ना जा सके, इनएस्केपेबल और यू कैन से इनविटेबल. हॉन्किंग, हारन का शोर, क्रिएटिंग नॉइज. डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग के बाद अब हम इसकी ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं. एंड द फर्स्ट लाइन इज द मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में आलूदगी की बड़ी वजूहात आर ट्रैफिक ऑन रोड्स, सड़कों पर ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन साइट्स, तामीराती काम के मुकामात, केयरलेस यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, बरकी आलात के बेदरीग इस्तेमाल यानी कि खुले आम उसका इस्तेमाल, बेख्तियाती के साथ उसका इस्तेमाल. एंड लाउड स्पीच पैटर्न्स और बुलंद आवाज़ में अंदाज़े गुफ्तगू हैं. उसने कुछ वजूहात बताई हैं कौन कौन से. द मेजर कॉजेज ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन पाकिस्तान आर ट्रैफिक ऑन रोड्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, केयरलेस यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एंड लाउड स्पीच पैटर्न्स. पाकिस्तान में आलूदगी की बड़ी वजूहात सड़कों पर ट्रैफिक, तामीराती काम के मुकामात, बरकी आलात के बेदरीग इस्तेमाल और बुलंद आवाज़ में अंदाज़े गुफ्तगू है. नॉइज कमिंग फ्राम डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एडिस्ट, नकलो हमल के मुख्तलिफ ज़राए से पैदा होने वाला शोर, मसलन व्हीकल्स, एयरप्लेन्स, ट्रेन्स, शिप्स. गाड़ियों, हवाई जहाज़ों, रेलगाड़ियों और बहरी जहाज़ों से. प्रूव्स टू बी हाईली स्ट्रेसफुल फॉर ह्यूमन कम्युनिटीज़, इंसानी आबादियों के लिए इंतहाई ज़हनी दबाव का सबब साबित होता है. Noise coming from different modes of transport, adist vehicles, airplanes, trains, ships, proves to be highly stressful for human communities.
नकलो हमल के मुख्तलिफ ज़राए यानी गाड़ियों, हवाई जहाज़ों, रेलगाड़ियों और बहरी जहाज़ों से पैदा होने वाला शोर इंसानी आबादियों के लिए इंतहाई ज़हनी दबाव का सबब साबित होता है। With the population growth and development in urban areas, शहरी इलाकों में तामीर तरक्की और आबादी में इजाफे के साथ साथ द vehicular traffic has also multiplied, गाड़ियों की आमदरफ्त में भी कई गुना इजाफा हो गया है। With the population growth and development in urban areas, the vehicular traffic has also multiplied. शहरी इलाकों में तामीर तरक्की और आबादी में इजाफे के साथ साथ गाड़ियों की आमदरफ्त में भी कई गुना इजाफा हो गया है। This has given rise to noise pollution. आलूदगी में कई गुना इजाफा हो गया है, यानी कि स्टेज ने आलूदगी को मजीद बढ़ा दिया है। लार्जली इन द फॉर्म ऑफ अनवारंटेड हॉकिंग बाय ड्राइवर्स, ड्राइवरों की तरफ से गैर ज़रूरी तौर पर हारन बजाए जाने के सबब। इसने एक और रीज़न बताई है, क्या कहता है? दिस हैज़ गिवन राइज टू नॉइज पोल्यूशन लार्जली इन द फॉर्म ऑफ अनवारंटेड हॉकिंग बाय ड्राइवर्स, ड्राइवरों की तरफ से गैर ज़रूरी तौर पर हारन बजाए जाने के सबब आलूदगी में कई गुना इजाफा हो गया है। ऑल्सो द मशरूम ग्रोथ ऑफ रेजिडेंशियल कॉलोनीज, तेज़ी से बढ़ती हुई कॉलोनियों ने भी नियर एयरपोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों के करीब हैज़ एक्सपोज्ड रेजिडेंट्स टू परमानेंट एंड अनअवॉइडेबल सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, वहाँ के मकीनों को आलूदगी का मुस्तकिल और नागुज़ीर ज़रिया बना दिया है। Also the mushroom growth of residential colonies near airports and railway station has exposed residents to permanent and unavoidable source of noise pollution. एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों के करीब तेज़ी से बढ़ती हुई कॉलोनियों ने भी वहाँ मकीनों को आलूदगी का मुस्तकिल और नागुज़ीर ज़रिया बना दिया है। तो ये इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन थी। अब हम इसकी सिंपल इंग्लिश पढ़ते हैं। द मेजर कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन पाकिस्तान आर ट्रैफिक ऑन रोड्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, केयरलेस यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज एंड लाउड स्पीच पैटर्न्स। तो इसकी सिंपल इंग्लिश है कि देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ पोल्यूशन इन पाकिस्तान। कौन कौन सी हैं? ट्रैफिक ऑन रोड्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स, सेम वर्ड्स आ रहे हैं यहां तक। आगे कहता है केयरलेस यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड लाउड नॉइज स्पीचेस। तो यहां पर आप देख सकते हैं लाउड स्पीच पैटर्न्स के लिए लाउड नॉइज स्पीचेस का वर्ड यूज किया गया है और अप्लायंसेस के लिए डिवाइसेस का वर्ड यूज किया गया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड लाइन। Noise coming from different modes of transport, added vehicles, airplanes, trains, ships, proves to be highly stressful for human communities. So simple English है, the noise coming from different types of vehicles such as aeroplanes, trains and ships. With the population growth and development in urban areas, the vehicular traffic has also multiplied. तो सिंपल इंग्लिश है, as the population increases, the traffic flow is also increased in cities. तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए पॉपुलेशन इंक्रीजेस का वर्ड यूज किया गया, मल्टीप्लाइड के लिए इंक्रीज्ड का वर्ड जस्ट यूज किया गया। एंड द नेक्स्ट लाइन इज दिस हैज गिवन राइज टू नॉइज पोल्यूशन largely in the form of unwarranted honking by drivers. अनवारंटेड हॉकिंग के लिए अननेसेसरी हॉकिंग का वर्ड यूज किया गया है। अननेसेसरी हॉकिंग बाय ड्राइवर्स हैज ग्रेटली बिकम अ सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। The next line is also the mushroom growth of residential colonies near airports and railway station has exposed residents to permanent and unavoidable source of noise pollution. तो simple English है, it is a cause of noise pollution in the housing schemes
and colonies near airport and railway stations, the people suffer from noise pollution forever. So dear students, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 3 भी अख्ताम को पहुँचता है.